Assalamu alaikum students, I hope you people are doing good and welcome to another online lecture. So now in previous class we discussed regarding the characteristics of health indicator, means what kind of characteristic a health indicator should possess, so then that indicator can be considered as valid to assess the health of a particular population. As you people can see in this slide right now, we discussed all these characteristics of health indicators, but in this lecture we are actually going to study uses of health indicators. Okay, means what are the uses of health indicators? So we will discuss. The first most important use of health indicator is to measure the health of a community. This is very simple and it's very easy to know. Means if we want to measure the health of a community, then we will be using health indicator. Okay, further, means how we can measure the health of a community, we will focus or calculate all the indicators which are responsible, like diet is another indicator to assess the health of a community. Absence of disease is another indicator to assess the health of a community, right? Okay, and similarly we can say average life expectancy rate is another factor to assess the health of a community. Similarly, morbidity and mortality rates are another factors to assess or measure the health of a community. So we can say we can use health indicators to measure the health of a community. Perfect. I think this point is clear now. If you have any queries or problem, you can ask the question at the end of this class, right? Okay, further, another important use of health indicator is description of the health of the community. Means if we will be using health indicators, we will be able to describe the health of a community. Either community is affecting from diet related health problems, or community is affected with the high mortality rate, or community is suffering from high disability rates. So it's mean describing a particular health indicator can be done via usage of health indicator, and the usage of health indicator will let us know means what is the exact or overall health of a particular community. Sure. Further, comparison of the different health indicator. Yes, another use of health indicator is to compare health indicators. Means suppose we are going to compare mortality rates with the morbidity rates of a particular disease in a population. If there are higher mortality rate, it's mean the health status of that population is at greater risk. But if the morbidity ratio is decreased, okay, or the mortality ratio is less, so decreased mortality ratio suggests us the population will be suffering from some diseases, but those diseases are not deadly one, because those diseases could be morbidity kind of creating morbidity kind of related problems. Further, another use of health indicators like identification of health needs and prioritizing them. हमें हेल्थ नीड्स का पता चल जाएगा कि इस एरिया में डिजीज़ की अगर मोर्टेलिटी रेशो हाई है तो मोर्टेलिटी रेशो की जो ज़रूरियात होंगी कि हमें फ़ौरन से वहाँ पे थेरापीज़ या थेरापी रिलेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए. अगर डिजीज़ का बर्डन ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ इंक्रीज डिजीज़ मॉर्बिडिटी हमें लोगों को एजुकेट या अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लाने चाहिए. बट इन केस ऑफ मोर्टेलिटी हमें क्या करना चाहिए? थेरापी या ड्रग रिलेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए जिससे लोगों की थेरापी की जाए. लेकिन मॉर्बिडिटी केस में हम क्या करेंगे? लोगों को अवेयरनेस देंगे. फर्दर, एवेल्यूएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. हेल्थ इंडिकेटर्स का सबसे बड़ा या सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ ये है कि हम क्या करते हैं कि हेल्थ सर्विसेज को एवेल्यूएट करते हैं कि क्या हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, क्योंकि अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी तो तमाम मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे. लेकिन हेल्थ सर्विसेज अगर बुरी हैं तो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स हेल्थ इंडिकेटर्स सारे जो हैं वो पॉजिटिव होंगे. सही. फिर फर्दर है हम लोगों के पास पॉइंट प्लानिंग एंड एलोकेशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज. बिल्कुल, जब हमें हेल्थ इंडिकेटर्स का पता चल जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंडिकेटर्स जिस तरह हमें बताएंगे कि यहाँ पे मॉर्बिडिटी रेशो ज़्यादा है या मोर्टेलिटी ज़्यादा है या डिसेबिलिटी रेट्स ज़्यादा हैं,
या फिर हम लोगों के पास डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, तो हम उस तरह से प्लान करेंगे उस पॉपुलेशन के लिए, उस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर डिसेबिलिटी रेट्स ज़्यादा हैं तो हम उस एरिया के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ताकि उन लोगों को भी एम्पावर किया जाए और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। और इसी तरह हम लोगों के पास अगर एक पॉपुलेशन में मिसाल के तौर पे डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ओबेस लोग ज़्यादा हैं, ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे ताकि वहाँ पे जो डाइट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं दे शुड बी एक्टिव टू सपोर्ट और फैसिलिटेट द पीपल्स टू मेंटेन प्रॉपर डाइट। फर्दर द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हेल्थ सक्सेसेस, कि हम लोगों ने जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं, उनकी सक्सेस रेशो भी असेस की जाएगी बाय यूजिंग हेल्थ इंडिकेटर्स, राइट, और बाय मेजरिंग द हेल्थ सक्सेसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर, okay, means how we can use health indicator to assess the overall success or health of a particular community. Sure. So in next we are going to discuss or classify health indicators. So these are the major classes of health indicators: mortality indicators, morbidity indicators, disability rates, nutritional indicators, health care delivery indicators, utilization rates, further indicators of social and mental health, environmental indicators, socio-economic indicators, further health policy indicators, indicators of quality life, and other indicators. So these are list of indicators which we will study in this lecture. So stay tuned, and if you have any questions, so you can ask during the class and even at the end of the class as well. First, mortality indicators. We are continuously discussing mortality indicators, और मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि mortality indicators क्या होते हैं. Actually mortality indicators tells us the number of deaths in a population, कि एक population है उसमें कितनी लोगों की डेथ हो रही हैं. This is actually a mortality इंडिकेटर, और हमें फाइंड करना है कि कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से डेथ्स एक पॉपुलेशन में हो रही हैं, तो उस फैक्टर को हम क्या कहेंगे, मोर्टेलिटी इंडिकेटर, राइट स्टूडेंट्स. सो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाएंगे, एक तो है क्रूड डेथ रेट. अब मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स को जब हम सब कैटेगराइज करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे टाइप्स आ जाएंगी, सब टाइप्स, जिसमें क्रूड डेथ रेट आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेशो, और डिजीज़ स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फैटेलिटी रेट. ये सारे जो हैं यहाँ तक हम लोगों के पास मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की सब टाइप्स हैं. फर्दर आगे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स शुरू हो जाएंगे. तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स की, राइट. सो सी ओवर हियर इन मोर्टेलिटी इंडिकेटर द फर्स्ट वन इंक्लूड क्रूड डेथ रेट. Crude death rate is considered as a fair indicator of the comparative health of the people. It is defined as number of deaths per 1000 population per year in a given community, usually the mid-year population. तो क्रूड डेथ रेट से मतलब है हम लोगों ने एक जर्नल डेथ रेट देखना है कि 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, एक साल के अंदर 1000 की लोगों की पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हो गई है. सो दिस रिप्रेजेंट्स क्रूड मोर्टेलिटी रेट. बट इसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो डेथ उनकी किसी वायरस की वजह से हो रही है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, किसी एक्सीडेंट से हो रही है. सो दिस इज़ अ क्रूड डेथ रेट. दिस इज़ अ ओवरऑल जर्नल डेथ रेट. दिस डज नॉट स्पेसिफाइज द काजेज ऑफ द डेथ in a particular population. Further, the usefulness is restricted because it is influenced by the age, sex, composition of the population, socio-economic and socio-cultural environment of the communities. तो इस क्रूड डेथ रेट का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस पॉपुलेशन में एज स्पेसिफिक किस एज में कितने लोगों की डेथ ज़्यादा हुई, किस जेंडर, मेल में ज़्यादा डेथ हुई या फीमेल में डेथ ज़्यादा हुई हैं, और इन लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्या ये गरीब लोग थे इस इलाके में या इस इलाके में लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था वो इम्प्रूव था. तो इसका मतलब है क्रूड डेथ रेट हमें जर्नलाइज्ड डेथ रेट्स के बारे में बताता है और साथ में ये बताता है कि सेक्स वाइज और इसके अलावा जो एज वाइज और साथ में उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग क्रूड डेथ रेट हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन बताता है.
Crude death rate in India includes 6.3 deaths per 1,000 population and 7.4 deaths per 1,000 population. ये SRS 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि हम लोगों के पास इंडिया के अंदर 6.6 डेथ्स हैं और 6.3 और साथ में हम लोगों का 7.4 है. तो ये क्रूड डेथ रेट है इंडिया में किसी भी पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए. सो इस तरह से हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. ये एक ग्राफ है यहाँ पे जो कि डेथ रेट बता रहा है क्रूड डेथ रेट के बारे में. ये ईयर है कि 2008 में कितने लोगों की डेथ हुई तो 5.9. 2009 में कितने लोगों की डेथ हुई तो वो आप यहाँ पे आके ऊपर मैच करते जाएं तो 2019 में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कम होती गई, 5.9 से थोड़ी कम हो गई है. और इसी तरह जाके 2017 में हम लोगों के पास लोगों का जो क्रूड डेथ रेट था वो 5.9 था. और अर्बन एरियाज़ की बात करें और इसके अलावा फिर रूरल एरिया की, क्योंकि ये ग्रीन लाइन जो अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन रूरल एरिया में जो क्रूड डेथ रेट रिपोर्ट किया गया था वो मिनिमम 6.3 अर्बन एरिया में ये टोटल क्रूड डेथ रेट जो था वो 2017 में 6.3 था. और जो 2008 में जो था ये हम लोग पास 7.4 था टोटल क्रूड डेथ रेट. लेकिन रूरल एरियाज़ का देखें तो रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा क्रूड डेथ रेट था वो जो 2017 में था 2008 में था और 2017 में कम हो गया आके. सो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ईयर वाइज जो क्रूड डेथ रेट की रेशो आ रही है ये बता रहा है हमें ग्राफ. तो इसको आपने डिटेल से पढ़ना है, इसको समझना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टूडेंट, in next lecture we are going to discuss expectation of life, so stay tuned if you have any queries up to crude death rate and further mortality indicators and further regarding like uses of health indicators. So post your questions in comment box as well, so I will address your question. Stay tuned. Allah Hafiz.